So now we are going to be talking about the origin and the main life and then the death of stars. और इसकी वैसे अगर अभी हम लोग बात शुरू करेंगे आपको नज़र आएगा कि इससे काफ़ी मिलती जुलती बात हम लोगों ने accretion model वाली वीडियो में की थी. Who have watched those video, they will probably find this one pretty easy as well. So we'll be periodically be coming back to this graphic to talk about the life of a star. So first of all, चाहे हम लोग कैसे भी स्टार की बात कर रहे हों, the journey starts off with the nebula, which is a cloud of gas and dust. So ये हम पहले देख चुके हैं. So with the cloud of gas and dust, this keeps gaining mass. क्योंकि आपके पास एक existing cloud होगा, and this is now also going to keep attracting more of these gases and this dust. So this is basically because of the gravitational force of attraction. अब जिस तरीके से इसका मास गेन होता रहेगा, याद रखें कि the gravitational force is basically what is keeping the cloud intact at this point. At a point जब मास बहुत ज़्यादा हो जाएगा, we say that the gravitational force is, this increases until this point, so until the cloud collapses. So the cloud is going to collapse under the effect of its own gravity, and this forms a protostar. सही, तो ये अब बिल्कुल पहला स्टेज हुआ है जो अभी ऊपर लेबल नहीं है. बाय द वे, ऊपर वाला डायग्राम इज नॉट ऑल दैट कंप्लीट. सो व्हेन द क्लाउड कोलैप्सेस अंडर इट्स ओन ग्रेविटी, ये जो इतना सारा मास है जो अंदर की तरफ पुल कर रहा है सारे मैटर को, इसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट बनता है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल द प्रोटोस्टार. सही है. सो अगेन इसकी पहले हमने बात की हुई है, ये क्योंकि स्टार का प्रोटोटाइप है, उसकी एक बिगिनिंग स्टेज है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ए प्रोटोस्टार. अब ये एक प्रोटोस्टार बना है, जाहिर सी बात है ये कोलैप्स कर गया है, बट दिस स्टिल कंटेन सम मास. सो दिस विल अगेन कीप अट्रैक्टिंग मोर ऑब्जेक्ट्स. सो द प्रोटोस्टार कीप्स अट्रैक्टिंग more matter. अब इसके बाद क्या होगा, you can also probably guess. वो ये है कि now as the matter is increasing, so mass तो बढ़े जा रहा है, लेकिन when the new particles come in, they are going to collide with the already existing particles in the cloud. So when they collide, अगर आप इसको energy changes में समझना चाहते हैं, आप ये भी कह सकते हैं that the GPE of the particles basically turns into kinetic energy as they collide, and this causes the temperature of the protostar to increase. So basic energy interchange hai. So temperature of protostar increases. अब जाहिर सी बात है, it's still going around attracting more and more matter, so temperature बढ़ता ही चला जा रहा है. At a point when the core is hot enough, अब हम स्टार की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है जब एक पॉइंट पे द कोर इज़ हॉट इनफ, वी नो दैट द नेक्स्ट स्टेप विल बी न्यूक्लियर फ्यूजन. जब आप लोग ये यूनिट पढ़ रहे होंगे अपने फिजिक्स में, यूनिट 5 जो है, तो आपने ये एक चीज़ पढ़ी होगी कि न्यूक्लियर फ्यूजन की एक शर्त ये है दैट द टेम्परेचर नीड्स टू बी रियली हाई सो दैट दे कैन ओवरकम देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. सही है. सो जब ये आपके पास न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगा, ये तब होना चाहिए जब इसका टेम्परेचर इज सफिशेंटली हाई. और इसकी एक इक्वेशन है विच यू आर सपोज टू नो इन योर सिलेबस, विच इज़ ए ड्यूट्रियम न्यूक्लियाई फ्यूजिंग विद ए ट्रिटियम न्यूक्लियाई टू गिव यू हीलियम एंड एनर्जी. सही. सो दिस एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड is what powers stars. ये हम लोगों ने previous video में इसकी बात की थी. And at the point when nuclear fusion starts to occur, जब ये ऊपर दिया हुआ रिएक्शन होने लगता है,
we say that this is the birth of the star. So तो ये स्टार की फॉर्मेशन हुई है. So from the nebula to the protostar and now finally to the star. Now when this has formed, अब यहाँ पे इसमें दो शराइत हो सकती हैं as to what happens regarding the birth. एक हो सकता है if you have a small or what you can say a medium sized star. इसका mass is approximately equal to the mass of the sun. In this case जो star बनता है, this star we call either a yellow or a red dwarf. But if you have a large star, और large की क्या condition होती है कि इसका mass is greater than 8 times the mass of the sun. So in this case, this forms a blue or a white star. So for example, our sun would be qualified as a yellow or red dwarf. It's not that hot. मतलब obviously we feel the heat of the sun, but in the grand scheme of things, जब आप सारी galaxies, सारे stars को देखें, it's not that hot. बाकी जो stars होते हैं blue और white वाले, they are much larger as well as hotter than the sun. तो ये तो खैर कुछ nomenclature की बात हुई है, लेकिन अभी हमारा जो sun है, sorry, जो अभी किसी भी स्टार की हम बात कर रहे हैं, this is now in the stable part of its journey. So stability की क्या शर्तें होती हैं? अक्सर आपसे एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा कि explain in terms of forces how a certain star is stable. उसकी शर्त ये होती है कि अगर मैं एक स्टार की बात करूं, and again ये भी हम पहले देख चुके हैं, if we have a star, हमें पता है इसमें दो तरीके की फोर्सेस होंगी. There is going to be this outward force because of the high temperature, और उसकी वजह से जो न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी निकल रही होगी, so this is going to be that outward force. So outward force due to the high temperature or pressure. This will be opposed by the inwards gravitational force between the matter. So जो आपके पास ये बिल्कुल शुरू में जो प्रोटोस्टार के अंदर डस्ट और गैस था, ये जो एक दूसरे को खींच रहे होंगे अंदर की तरफ, trying to basically implode the star, उसमें जो gravitational force होगी, this is inwards, and the outward force is basically due to the high temperature, और इसकी वजह से जो nuclear fusion होता है उसकी वजह से जो energy release होता है. When we talk about a stable star, we say this, that for a stable star, ये जो ऊपर हमने forces लिखी हैं, they must be equal, they must be balanced. So inward gravitational force, this must be equal to the outward force due to the high temperature. So इस तरीके से सन अपनी जो लाइफ है, या किसी भी स्टार जो है, ये अपनी लाइफ के ये मेन सीक्वेंस या एक स्टेबल हिस्से में दाखिल होता है. तो ये इसकी मेन स्टेजेस की बात हो गई. अब चलते हैं डेथ ऑफ द स्टार की तरफ. सो लेट्स गो बैक टू दिस डायग्राम. सो अभी तक हमने जो बात की है, हम लोगों ने कुछ यहाँ तक की बात की है कि आपका जो नेबुला है, बीच में ये कहीं प्रोटोस्टार बना था, दिस स्टेज इज नॉट इन द डायग्राम, और फिर उसके बाद ये स्टार बन गया. और फिर अगर एवरेज स्टार है, सो दिस इज़ अ येलो और अ रेड ड्वार्फ, और अगर एक ज़्यादा बड़ा स्टार है, ज़्यादा मैसिव है, सो वी से इट्स अ ब्लू और अ वाइट स्टार. यहाँ से अब उसका डेथ का हिस्सा शुरू होता है, एंड दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ.
So stars then continue in the stable stage, which is known also as the main sequence stage of a life of a star. But then eventually stars also die out. अब जाहिर सी बात है सन तो अभी तक sun has not died yet, otherwise we would have died as well. But there are other stars which have died before. So let's talk about this now. The death of a star. The beginning of the end. Now how does this go about? So first off, आपको पता है that in the main stage of a star, और चाहे ये कोई सा भी star हो, helium is being fused together, hydrogen is being fused together to form the helium. So how this starts is कि जो hydrogen जो इस star के core में है, which is needed for it to continually supply energy, जब ये ख़त्म होने लगता है. So when the hydrogen starts to run out, से यहाँ से अब कहानी शुरू होती है. So hydrogen ख़त्म होने लगा है. Now think about the hydrogen and in terms of what it was doing for the stability. तो अभी हमने stability की क्या बात की थी? हमने कहा था कि जो outward force है ये high temperature की वजह से produce होती है, जो nuclear fusion reaction चल रहा होता है, and the inward force is because of the attraction between all the mass. लेकिन अब क्योंकि hydrogen is starting to run out, तो अब आपके पास बाहर की तरफ उतनी force नहीं होगी. And in comparison, the inward force, जो gravitational force है, this is going to be more. So the next step is this, that the gravitational force, which is inwards, this becomes greater than the outwards force due to high temperature. और इसकी वजह से क्या है कि because the inwards force is greater and the outwards force is less, so now the star basically implodes. So the core of the star, this collapses. अब ये core collapse हो गया, तो क्या हुआ है कि इस GPE ने basically जब इस matter को सारा अपनी अंदर की तरफ खींचा है, so all of the matter is now even closer together, या एक दूसरे से और भी ज़्यादा टकरा रहे हैं. So in terms of energy interchange, अगर हम फिर से सोचें, so the gravitational potential energy is turning into kinetic energy of the particles. Kinetic energy बढ़ा, this also again leads to the temperature rising. So the temperature then also goes up. अब temperature बढ़ गया है, आपको तो पता है कि the high temperature was in fact a condition for nuclear fusion. It can only happen when the temperature is sufficiently high. अब क्योंकि temperature बढ़ा है and the hydrogen nuclei are now going to be moving even faster, तो अब और भी ज़्यादा fusion reactions होने लगेंगे. So for a moment you might be thinking कि शायद अब ये star की death को रोक दे, लेकिन the idea is that as more fusion happens, अब आपका hydrogen और भी ज़्यादा तेज़ी से deplete होता है. So hydrogen depletes faster. सही, तो अंदर वाली force अब और भी ज़्यादा हो गई as compared to the outward force. So outward force keeps decreasing और inward force जो है ये इसको collapse करवाए जा रही है. At this stage we say that the star has now turned into and again this is different based on हम कौन से type के star की बात कर रहे हैं. If again you have a small to medium size star, so this name is called a red giant, and again if this is a large star, so we call this a red supergiant. सही, तो अगर बहुत बड़ा स्टार है, so this results in a red supergiant, otherwise it's just called a red giant. जब ये इस स्टेज पे पहुंच जाता है, then what happens is that as the temperature is even greater, क्योंकि अब तो आपका सारा हाइड्रोजन तकरीबन ख़त्म हो गया, सही है, so temperature is even more, so this gives the nuclei enough energy that the helium now starts fusing
into carbon, क्योंकि अब टेम्परेचर इतना ज़्यादा है that even the helium nuclei they start fusing. And in doing so क्या होता रहता है कि because now there is a lot of outward force as well. So जब ये outward force बढ़ रही है तो ये आपका स्टार बहुत तेज़ी से expand करता है, and in doing so it actually also kind of like eats up a few planets. ठीक है? So for example when sun is going to die, so ये mercury को खा जाएगा. So in doing so ये क्यों हुआ है? क्योंकि जब ये इतने heavy elements जो हैं, पहले तो hydrogen था सिर्फ, when now helium starts to fuse, it's going to expand even more, outward force is going to be more, और ये जो है इसका temperature बढ़ेगा and this is going to spread out. So as it cools off, it then becomes a planetary nebula. This is kind of like an optional stage क्योंकि इसका time काफ़ी कम होता है with regard to cosmic events. जैसे कि अभी जो star का main sequence जो होता है, the life of a star is like many millions of years. तो उसके मुकाबले में planetary nebula is like only like 10,000 years. So इस वजह से I'm saying that this is like an optional stage. So फिर ये आपके पास एक planetary nebula बन गया, and at the center of this nebula is a white dwarf. ये एक important stage है. So the nebula, this throws off the gas because it's lighter obviously, and what remains is a white dwarf. सही है, और ये इसको white dwarf क्यों कहा जाता है? Because this is basically emitting light and some amounts of heat as well. So फिर आपके पास बन जाता है ये white dwarf. फिर इसकी कुछ life होती है, but this is again like a pretty normal time frame आप कह लें with regard to cosmic events. ये कुछ 1 billion years के लिए होता है. So after that, जब ये cool off हो जाता है, so after the white dwarf cools off, another stage now happens, which is a black dwarf. So yeah, so these are all of these stages. So फिर ये cold black dwarf, because of also the helium then running out, this is just mainly made of carbon. So ये सारी तो अभी हमने low mass stars के हिसाब से बात की है. Now how does the picture change if we have a high mass star? So for a high mass star क्या होता है कि for this the stable stage is much shorter, because a high mass star, जो हम लोग एक large stars की बात कर रहे थे, so high mass stars use up hydrogen very quickly. जितना बड़ा स्टार होगा उतनी ही उसकी लाइफ कम होगी. सही है, बिकॉज द बिगर द स्टार द फास्टर इट्स गोइंग टू यूज अप हाइड्रोजन. उसका स्टेबल लाइफ का जो साइकिल है वो उतना ही जल्दी ख़त्म होगा. फिर वही बात कि जब कोर कोलैप्स होगा, इन द केस ऑफ अ लो मास स्टार दैट वाज नोन एज ए रेड जायंट, हियर इट फॉर्म्स ए रेड सुपर जायंट. इसको भी लेट्स राइट इट इन द सेम कलर. So this forms a red supergiant. अब जब ये red supergiant वाले stage में है, so pretty much the same thing happens जो पहले हो रहा था. So again the helium fuses into carbon. Again, because this is a large star, even all the helium gets used up. So when all the helium is used up, then carbon also fuses. ये उधर नहीं हो रहा था. सही है, उधर पे the only stage was helium fusing into carbon and that was the end. लेकिन यहाँ पे carbon is going to fuse into even heavier elements. Because of the high temperature.
ठीक है, वहाँ पे इतना टेम्परेचर हाई जा ही नहीं रहा था, तो ये फ्यूजन पॉसिबल ही नहीं था. बट यहाँ पे क्योंकि इतना बड़ा स्टार है, तो यहाँ पे ये पॉसिबल है दैट बिकॉज ऑफ दैट हाई टेम्परेचर आपके पास कार्बन भी फ्यूज कर जाए इनटू मोर एलिमेंट्स. देन व्हाट हैपेंस इज दैट ये आपको और प्रोग्रेसिवली हैवियर एलिमेंट्स दे रहा होता है. सो देन ऑक्सीजन हैपेंस एंड नाइट्रोजन हैपेंस, एंड देन फाइनली when iron is obtained as a result of this fusion reaction. This is the critical point. So at this point, the nuclear fusion stops. And then the next stage, जहाँ पे एक बड़ा सा शानदार सा धमाका होता है, and all of the energy of the star is released in what is called a supernova, या a supernova explosion. So इस धमाके की वजह से when all of this energy is released in such a short form, in such a short amount of time, the temperature gets so high that this now अब फ्यूजन होगा, लेकिन अब आयरन से भी ज़्यादा हैवी एलिमेंट्स बनेंगे. So to allow fusion of elements, इसको ऐसे कह देते हैं just to make it very clear, into products heavier than iron. So ये products की बात हो रही है. Again it becomes pretty much like the same as a low mass star के जिस तरीके से expand करता है, then it starts to cool off, and then जो ये nebula सा बनता है, तो इसमें ये बाकी जो heavy elements हैं, these are thrown into space as a nebula. So material thrown off as a nebula. लेकिन यहाँ पे ये जो nebula है, this is not really going to be like a stage of the death of a star, क्योंकि nebula जो है ये expel हो चुका है. जो main star था, this is now separate from it. यहाँ पे भी again याद करें, if you draw parallels, तो वहाँ पे white dwarf था, यहाँ पर भी the center of the supernova is going to be super hot. वहाँ पे क्योंकि again temperature was not that high, so यहाँ पे the center of the supernova also collapses. And this may now give us either of two things. It may give us a neutron star, and then the neutron star is also spinning, ये घूम रहा होता है, pretty much like the accretion disk that we were talking about then, और ये बाहर भेज रहा होता है some radio waves. सही है? But then there is another much more interesting possibility which happens if the star was, so if very very large star, अगर बहुत बड़ा स्टार था, कि चलें अभी हम मेन जो बात कर रहे हैं वो लार्ज स्टार्स की कर रहे हैं, बट इफ इट वाज वेरी वेरी बिग, इट मे फॉर्म ए ब्लैक होल. और ये जो ब्लैक होल है, न्यूट्रॉन स्टार भी ऑब्वियसली डेंस है, बट द ब्लैक होल इज सो डेंस दैट इट डज नॉट इवन अलाउ लाइट टू एस्केप इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड. इट्स सो हैवी कि वो हर चीज को अपनी तरफ खींच लेता है. So this is all of the stages of a star. ठीक है? So there was the nebula, and then the nebula forming a protostar. Mark this for yourself. ये इस diagram में इतना clear नहीं है. But at this stage, there's also going to be the formation of a protostar, and then the protostar into, depending on what the star is, average star, a massive star, फिर red giant, and then the planetary nebula. When the gas is thrown off, it becomes a white dwarf, and later it also becomes a black dwarf.
ठीक है, ये भी यहाँ missing है. And for the other one, there is the protostar and then the massive star, फिर red supergiant, फिर supernova, and then either of these stages. एग्जाम में कभी कभी आपके पास सवाल कुछ ऐसा आता है that they ask you that when does the fusion of such and such elements happen. For example, they might ask you when is helium fusing into carbon, that's the red supergiant or the red giant stage. And then maybe for a heavy star, they might ask you, okay, when does, for example, when are the heavy elements formed? So heavy elements form होते हैं supernova के stage में. So these are the different stages, and these are also how they can be assessed. See you next time.